Good morning viewers, you're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. Leader of the opposition in the Kerala Legislative Assembly and senior Indian National Congress leader V.D. Sathiesan said that candidates' announcement for upcoming elections cannot be made without clarity on the polls schedule. Speaking on the issue, Sathiesan stated that declaring candidates without knowing the election dates would not be practical. Of the election. Without knowing the date of the election, we don't know which month it is going to be held. How can we declare the candidates? Not only the UDF, the LDF and BJP, NDA, they are not able to declare our own candidates because of the indefinite situation, the declaration of the election. Who would be the possible Chief Minister candidate for India? That you know that it will be decided after the election. That is the procedure of the Congress party. It is a decision of the Congress High Command after the election. They will decide that there is a procedure. That I don't know. It has to be decided by the Congress High Command. They will take a decision. They will take a decision. They will take a decision. According to that, we will take a decision on the candidates. I don't know. Gas issue is a very serious issue. The government of India has to ensure the proper distribution of the LPG. It is very dangerous situation now. Everywhere there is a concern that there is scarcity of LPG cylinders. Everywhere. It has to be accumulated. That is the duty of the government of India and Petroleum Ministry. So avail the situation. Avail the LPG cylinder. Reacting to reports of LPG shortage, Manoj Kumar Jha, MP of the Rashtriya Janata Dal, said the government should not treat concerns raised by the opposition as criticisms. He suggested that authorities verify the situation on ground, adding if the officials step out without protocol and interact with people directly, they would better understand issues being faced by the public. देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ यही दिक्कत है कि वैश्विक स्थिति से भी जो संकट उत्पन्न होता है ना, उसके लिए भी वो विपक्ष को, जिस राज्य में कांग्रेस है कांग्रेस को, जहां लेफ्ट है लेफ्ट, अभी हमारा चुनाव चूंकि हो गया है ना तो आरजेडी का भी नाम लेते हैं। इसके अलावा उनकी वोकैबुलरी में यही प्रधानमंत्री हैं जो कोविड के दौरान भी इनके लोग अनाउंस करते थे कि हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। आपको भी याद होगा कितनी बड़ी इमरजेंसी आई, लाखों लोग। कभी कभी विपक्ष की चिंता को अपनी सिर्फ आलोचना मत समझिए, वो सुचारू करने का भी आपसे जाके बाहर देखिए ना। मैंने तो कहा प्रोटोकॉल छोड़िए, भेष बदल के प्रधानमंत्री जी घूमिए थोड़ा, आपको आइडिया लग जाएगा क्या दिक्कत है। प्रधानमंत्री को जा ही रहे हैं जगह जगह, तमिलनाडु। नहीं, मैंने कहा वेश बदल के, ये तो चुनावी वेश में जा रहे हैं ना, वेश बदल के जाए। जैसे सुनते हैं हम लोग कथाओं में कि राजा कोई था तो वो रात को घूमता था, जनता के संकट को सुनता था और अगले दिन कोर्स करेक्शन करता था। हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को कुछ दिन अब उस मॉडल पर भी काम करना चाहिए। ये क्या कंट्राडिक्टरी है कि पीयूष गोयल जी बार-बार कहते हैं कि भारत। Reacting to remarks by the Dravida Munnetra Kazakam government in Tamil Nadu, K. Annamalai, leader of the Bharatiya Janata Party, accused the state government of creating panic among the public over fuel supply concerns. And we strongly condemn the DMK government in Tamil Nadu creating a sense of panic and fear among our public. And Tamil Nadu, it is very unfortunate to see our brothers and sisters queuing up outside the petrol pumps, trying to collect more petrol in the fear that probably there will be a shortage in the future. When we don't see this happening anywhere in our country, only in Tamil Nadu this is happening only because DMK has chosen to spread fear and panic. And I'm happy from today morning the situation has normalized. Our Prime Minister Narendra Modi ji has assured in public, especially in the Tiruchi meeting, please don't spread any panic or fear. Everything is under control. Petroleum Minister and the Parliament has assured our people the non-Hormuz oil from 55% has gone to 70% diversification. 2 ships have crossed the Strait of Hormuz very safely and they are bringing natural gas to our country. The natural gas order that has come in effect from 9th of March has very clearly delineated 100% LPG supply will be on. Fertilizer will be 70% and 80% for industrial and 80% for the piped gas. When the government is very clear, when there is strategic reserve, when there is no shortage of petroleum anywhere, petroleum product anywhere,
Especially when we see our neighboring countries. They have gone announced 2 weeks holiday in neighboring countries for school children. They have pulled government vehicles out of the road. When all those things are happening, when America has increased the petrol price by 25%, Canada has increased by 21%, Italy has increased by 15%. India, under the safe hands of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, no petrol price has gone up after the current war that is happening between Iran, Israel and America. So I urge the DMK ministers not to spread panic and fear and to cooperate with the central government to make sure everything goes smoothly going forward. He also alleged that the Indian National Congress in Tamil Nadu is staging protests despite being so on the crisis. He accused Rahul Gandhi, leader of the opposition in the Lok Sabha, of misusing his position and spreading panic over gas and petrol issues. It is Mr. Rahul Gandhi ji is misusing his privilege as the leader of opposition, is misusing his privilege as the member of parliament. And the people of our country expect the opposition leader to behave with a sense of decency, to behave with a sense of decorum. And unfortunately, the kind of panic he is trying to spread with respect to the gas, petrol, is not only condemnable, is making the Congress party in Tamil Nadu to take gas cylinders, come to the road and do protests, when all of us know nothing of that sort is happening. When everybody is getting everything, petrol pump they're getting, LPG gas cylinders they're getting, commercial cylinders are getting regularized now. And not only that, in Makaradwar, sitting there with his MP, it is like college children sitting outside a college. Normally we see some 4 or 5 boys sitting outside the college and they behave. That is the way Rahul Gandhi ji and this team is sitting outside the parliament and the staircase, blocking the MPs from going inside, commenting on MPs, pulling MPs into fight. When any ministers are giving press meet, going and playing with them, and fighting with any ex-congressmen who have joined BJP now, strictly condemnable. So he has lowered the decorum and the sanctity of the house. So, and not only that, and it is also very unfortunate in Tamil Nadu, Congress and CPI together, they want to win this election, they are fighting. But in Kerala, when Mr. Rahul Gandhi ji speaks, he is accusing Mr. Vijayan should have been arrested by the central government. He is accusing that BJP and Communist Party are hand in glove in cahoot, which is very, very unfortunate. A leader of opposition of our country has stooped down to this level, including attacking his alliance partners, just to keep his political relevancy in the limelight. Now, one final question that CPI Shanmugam has said that why you are giving so less seats to CPI and you said Tirumavalam will be just giving. And I think CPI, Mr. Shanmugam ji's remark as the General Secretary of the party for Tamil Nadu, I think is in order. When he says for Congress has blackmailed you, when Congress has blackmailed you, from 25 they have taken 28 seats when Congress is losing elections across the country. When Communist Party, when we are loyal to DMK here for a long time, why are you reducing our seats? And they have reduced the seats for everybody just because they want to keep Congress happy. That clearly shows DMK is a slave of the Congress government. They want to keep Congress happy. That is the DMK's goal now. And tomorrow, Tirumavalam, I expect a lot of bickering within the alliance, and we will also see a lot of fracture within the alliance very soon. On the proposed Musi River Rejuvenation Project, and Ramchandra Rao, President of the BJP Telangana, offered suggestions to Revnath Reddy government regarding the implementation of the project. Rao said that instead of initially spending thousands of crores, the government should focus on setting up effective treatments plants on streams flowing into the Musi River, which said have turned the river into a channel carrying sewage and drainage sewage. He has given public presentation. No, I am giving him public advice. Instead of spending thousands of crores of rupees initially, you try to create effluent treatment plants on the streams which are flowing into the Musi, which is actually making the Musi where a storage of gutter water, sewerage water and drainage water. First, the government should try to see that these inflows from such sources should be stopped and effluent treatment plants has to be constructed. One. Number two, the cleaning of the Musi, you can do, we don't have any objection. Beautification of Musi is definitely Hyderabad people will love to have it. But for that, you have to first take the buffer zone, not 50 meters, but the earlier one of 12 meters. Because you cannot increase your buffer zone, even if it is on the beds of the buffer zone. The buildings can be constructed. We have seen in River Thames, we have this example Mr. CM also taken. He has taken the example of Seine River in Paris, where on its banks you find a lot of huge constructions of castles and palaces, which we can see through them.
So therefore, the constructions on the banks has to be allowed, and the passage of this free flow of water has to be allowed. But for that you cannot demolish the houses which are built legally by the hard-earned money of the middle class families. Even otherwise, if you want to do so, the first rehabilitation should be done and then the project should be taken up. I think the escalation of the project within few weeks from 5,000 crores to 7,000 crores, definitely we feel something malified in this entire project. Reacting to the government revoking the detention of Sonam Wangchuk, Sheikh Basir Ahmad, leader of the Jammu and Kashmir National Conference, said the decision was a positive step. Ahmad stated that in democracy, the use of stringent laws such as National Security Act should be carefully considered, adding that Wangchuk should not have been booked under such provisions. He said laws are meant for criminal and maintained that Wangchuk does not fall under that category. सेंटर ने आज सोनम वांगचुक के एनएससी के तहत जो उन्हें डिटेन किया गया था उसे आज रिवोक कर लिया गया। इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ अच्छा फैसला है। डेमोक्रेसी में इस तरह के लॉज को इस्तेमाल करना गलत बात होती है और सोनम वांगचुक ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसके ऊपर उसको एनएसए लगाया जाता, लेकिन इन्होंने लगाया। देर आए दुरुस्त आए, अगर उनको एहसास हो गया कि ये गलत था तो अच्छी बात है। लद्दाख के लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि सोनम वांगचुक जो है वो एक किस्म का हीरो रहा है लद्दाख के अंदर। उसने बड़े नेशनल इंटरेस्ट के काम किए हैं, आर्मी के साथ काम किया है। तो बीजेपी वालों को जब लगा तो लगा दिया, आज अगर रिवोक किया है तो खुशी है हमें और अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ, मैं उनको मशवरा देना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में इस तरह के लॉ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये क्रिमिनल लोगों के लिए होता है, वो क्रिमिनल नहीं था। लगता है कि अब लद्दाख की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी क्योंकि सेंटर ने रिवोक किया है एनएसए सोनम वांगचुक। क्या लगता है कि जो लद्दाख की मांगे हैं वो अब पूरी हो जाएंगी? वो उम्मीद तो नहीं लगती क्योंकि इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमको है उनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन मैं ये रिवोक किया है तो सोनम वांगचुक के लिए अच्छा है और उन लोगों के लिए जो इस पॉलिटिक्स में चलते हैं उनके लिए भी अच्छा है कि एनएसए के लिए डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है। On the Sabarimala temple issue, V. Muralidharan, leader of the Bharatiya Janata Party, accused the government of Kerala of attempting to mislead the public regarding its stance. Muralidharan said the state government is trying to create an impression that it is taking U-turn on the issue without actually changing its position, and alleged that the move is aimed at creating a perception among devotees that government is not against their beliefs, particularly in run-up to election. See, they are trying to create an impression that they are taking a U-turn. In fact, they are trying to fool the people by not taking a stand and giving an impression that they are changing their stand. They have not very clearly, in concrete terms, they have not changed their stand. They are saying that we are not against or we are for. What they are saying that this is not our topic, this should be decided by somebody else. So that means what is your stand? This should be made clear. Or are you coming to the point that regarding the temple rituals and temple matters, the governments have no role? If that is the case, then they should specifically mention that. And it cannot be only limited to one single issue. Then it can be the stand for every issue. That also they are not ready to mention. So this is a sort of an effort to hoodwink the people, to fool the people. Because there is an election, impending election. So they want to create an impression among the common man, among the believers, that the government is not against the believers. But at the same time, they are not changing their party position. That is the thing. Speaking on the state budget, Pushkar Singh Dhami, Chief Minister of Uttarakhand, said the government is committed to making the state one of the best in the country. Dhami said that budget focuses on the development of multiple sectors, including skills, employment and innovation. He also highlighted that potential of women entrepreneurs and state provisions have been made to support work and products. देखिए, उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अक्टूबर 2021 को बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और हम इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए उनके शब्दों के अनुसार निरंतर कार्य कर रहे हैं, निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। और
जो बजट है इस बार का, वो बजट हमारा उसी दिशा की ओर अग्रसर है कि हर क्षेत्र आगे बढ़े। हमारी मातृशक्ति जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हमारी माताओं बहनों के अंदर बहुत क्षमता है और कठिन परिस्थितियों के बाद भी लगातार उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद, उनको पहचान मिल रही है, उनको सम्मान मिल रहा है, दुनिया के अंदर जो है मांग बढ़ रही है उनके बनाए हुए उत्पादों की। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सेक्टर महिलाओं का है और युवाओं का है। युवाओं के लिए, कौशल के लिए, रोजगार के लिए, अन्य नवाचार के लिए इस बजट में हमने प्रावधान किया है। हमारा कृषि एक बड़ा सेक्टर है। इसके अतिरिक्त हमारा सीमांत क्षेत्र हैं, वाइब्रेंट विलेज हैं, समाज कल्याण का क्षेत्र है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया है। साथ ही यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में भी जहाँ हम काम कर रहे हैं वहीं हमने कृषि और बागवानी इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तमाम प्रकार का ये जो नए प्रावधान इस बजट में हमने किए हैं, सभी स्टेक होल्डरों से हमने बात की, उसी के बाद हमने सामान्य बजट प्रस्तुत किया है। और मुझे संतोष है कि इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में लगभग 5 दिन और छठे दिन 6 दिन तक, छठे दिन भी कुछ एक घंटे का कामकाज हुआ है। 41 घंटे से अधिक समय तक विधानसभा के अंदर पक्ष विपक्ष सबने चर्चा की है, विभिन्न मुद्दों पर बात हुई है और सामान्य बजट पास हुआ है। निश्चित रूप से ये बजट आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड को बहुत तेजी से समृद्धि की ओर आगे ले जाएगा। उत्तराखंड वासी शीर्ष पर पहुंचेंगे, उत्तराखंड शीर्ष पर पहुंचेगा। इस प्रकार इस बजट का प्रावधान किया गया है। Reacting to the ongoing global crisis, Mukhtar Abbas Naqvi, leader of the BJP, said Narendra Modi has consistently stepped forward a crisis managing during challenging times. देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा कि नरेंद्र मोदी जी हर संकट में संकट मोचक की भूमिका में उभर करके सामने आए हैं और संकट में संकट मोचक की भूमिका में जो नरेंद्र मोदी जी हैं कोई आज नहीं है। चाहे भुज का भूकंप रहा हो, चाहे कोरोना का कहर रहा हो, चाहे उनके प्रति राजनीतिक असहिष्णुता और स्पर्शिता का माहौल रहा हो, इन तमाम तरह के जो दौरों को दरकिनार करते हुए भारत की सुरक्षा, भारत के लोगों की समृद्धि और सम्मान को सुनिश्चित करते हुए बिना रुके हुए, बिना थके हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वही हकदार हैं किनारों के जो बदलने बहावधारों के। तो इस पूरी दुनिया में जो एक संकट और कंटक का दौर है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने की जो संवेदनशील और राष्ट्रीय हितों के प्रति समर्पित सोच रही है, उसका नतीजा और उसका परिणाम आज दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ पार्टियां, स्पेशली जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है जिसने कि इस देश पर 5 दशकों से ज़्यादा समय पर तक राज किया है, वो जो है वो जिस तरह का उसका व्यवहार है, जिस तरह से देश में भरोसा पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए, वो देश में भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए, उसमें जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इनके हित में कतई नहीं है। और आज जो है वो देश इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट है, सुनिश्चित है कि देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है। देश की जो कूटनीति है, देश की जो रणनीति है और देश की जो पूरी की पूरी डिप्लोमेसी है, वो भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है। और सभी लोग चाहते हैं कि शांति हो, सभी लोग चाहते हैं कि जो इस संकट के सागर से अमन का अमृत जल्द से जल्द निकले। लेकिन इस दौरान जो भी संकट और कंटक है, उसमें भारत के लोगों के हित और भारत को नुकसान ना हो, इसके लिए मजबूती के साथ सरकार काम कर रही है। That's all for now. Thank you for watching HORNBILL TV.